हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक्चुअली व्लॉग होना था, बर्थडे व्लॉग, बट मी बीइंग मी मैं भूल गई बनाना और Okay. हाफ बनाया है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आधा जो मैंने क्लिप्स बनाए हैं आई एम गोना मर्ज देम एंड शो यू गाइस, बट देन you have to stay till the end, so stay tuned. So I went to Zara to find my dresses and I did bump into this whole brown thing going on, brown top and brown skirt, and I really like the shade how they were going together, but the top from behind was too low, and that's something not really nice for me. So apart from that, everything looked good, but I did end up dropping the plan to buy that. And then again I had this few more options very similar to the first one, and few more like dress and everything I did try, and this was the second look. I mean, it looked good, but the top, it was too tight, and while removing it was very hard to remove, and I was like, no, I cannot have this in my wardrobe for sure. So the plan was to end with that, and then had the cinnamon bun, and then we are already getting very late, so I went ahead and had to this place, and I had this orange basil, some Italian pizza, and crispy mushroom. And trust me, all of my three orders were 10 on 10. Actually, not 10, 11 on 10. They were that good. So if you're somebody who goes to that mall, please try it. And then when I came home, I had this little surprise going on because it was my birthday. So we just cut the cake, and this it was my one of the favorite cake so far. Hello everybody. So I'm planning to vlog today. अभी मैं सो के उठी हूँ and it's pretty late. Reason क्योंकि हम सोए भी लेट थे because रूममेट दे बॉट केक, कुछ दोस्त वगैरह आए थे, हमने केक वगैरह कट किया, खाया पिया, मज़े किया है। एंड कल एक्चुअली मैं गई थी ड्रेस ढूंढने, वाकर साइड गई थी जो वहाँ पे नया मॉल खुला है, पर मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। एंड अगर कुछ अच्छा दिख रहा था तो वो शायद बड़ा था या छोटा था, एंड हर बार ऐसा कुछ तो हो रहा था। सो आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड गो ट्राई टू हंट अ सिंगल डिसेंट ड्रेस फॉर मी, and I'll take you along with me how my day goes. Getting my hair washed, guys. मुझे एक्चुअली ब्लो ड्राई करना था, इसलिए मैं सोचा इससे अच्छा वॉश ही करा लेती हूँ। क्यूट लग रही हूँ मैं वैसे, होता है अभी ये। अभी हम वेस्टर्न जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट आवर बर्थडे आउटफिट। होपफुली आई गेट समथिंग। H&M is the only store जहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट समथिंग। रेस्ट तो कुछ है नहीं इतना अच्छा। Then we reached the mall and I straight away went to the store that I usually go as usual, अपना H&M में। And then मुझे store में इतना अच्छा कुछ दिख नहीं रहा था। I mean they are just divided into two parts. One was fully red and one was fully blue. I'm not sure क्या theme चल रहा था, but out of that I found three dresses. Try these three outfits and see if I have a look. Sad, वो कपड़े नहीं मिलते हैं। मुझे पकड़ने भी नहीं आता, अगर वो खाना आ भी गया। मैं एशियन फूड खाने गई और अब ऑर्डर कुछ तो जब आएगा तब मैं दिखाऊंगी। खाना आने में बहुत टाइम लग रहा है। कितनी अकेली इंसान थक जाती हूँ हर एक घंटे में। Let's try and see how it goes. What is that? It's a whole mushroom. This big piece is mushroom. Now I'm going to Dagrushet to seek some blessing from Ganpati ji, and then move on with whatever I have to do. So let's go. Actually back from I went to Dagrushet and अब मुझे ready होके dinner पे जाना है with my girl gang. So let's get that thing done.
Outfit is, this is the top. Gonna pair it up with the golden watch, some rings. I hope you have enjoyed अभी तक का जो भी मैंने ऐड किया था. Actually for dinner we went out and हम इतने मज़े में थे शायद हम भूल ही गए फोटोज़ लेना. Okay, so let's just start with the gifts that I got. First thing first, मैं मेरी बहन की गिफ्ट दिखाऊंगी because I was very excited for this because it's a watch. तो वो मैंने ऑलरेडी पहन रखी है. Thank you. Next, French press coffee and tea. तो मैं खोल के दिखा देती हूँ. This. So this is what it is. This is the glass material. This is जो भी है fiber. And तो इसके लिए हमें roasted coffee चाहिए जो हम इसके अंदर डाल के पानी गर्म डाल के we have to wait and then we can enjoy. So this is from my roommate. और इसके gifts ना बहुत thoughtful gifts है, like very thoughtful gift. तो मैंने उसको एक हफ्ते से मैं बोल रही थी कि यार the plates that I have is, I mean I want white plate, ऐसा मुझे उसमें खाना खाने का मन कर रहा है. I have is fiber one. गर्म खाना अगर प्लास्टिक पे गया, even if it's fiber, it's mix of plastic only. So I wanted to avoid that happening because of the health stuff. So मुझे white plate चाहिए था, तो उसने मुझे white plate and बाउल भी ला के दिया है. It's very cute. Like I would have not expected anybody to do that. So this was very cute. He got me a baby wet wipes. Very cute chashma ka case. I'm somebody who wears specs on a daily basis, so very thoughtful of you. She got me this cute 3 nail filer, and then I have this very cute scrunchie which is in grey color. So thank you so much for this. Then our next gift is, so actually इसकी already packaging थी, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी, and क्योंकि मैंने खोला है देखने के लिए उस टाइम I opened in front of the person. So ये है sunflower. ये कितना cute है, pretty है. This actually वहाँ पे होता है वो जो मेरे बुक्स दिख रहे हैं वहाँ पे. So this is for that. I got a bracelet. Very cute. And this is like nazar na lage wala, what do you say, the symbol kind of thing. It's very cute. And then मेरा सबसे favorite chocolate अभी क्या, for a very long time it's this dark chocolate by Amul which is 55% wala, I think it is. So yeah, thank you for this. And this gift is from my flatmate and she gave me Engage ka perfume. I'm running over my perfumes, so this might help me. Thank you. This gift, भाई ने क्या किया, he sent me the money. He's like, buy anything for yourself. So me being obsessed with makeup and skincare, और मुझे already चीज़ें लेनी थी क्योंकि I was over with them, and मैं सोचा खुद के पैसे डालने से उसके जो पैसे उसने भेजे वही यूज़ कर लेती हूँ. So thank you for the money brother. I was out और मुझे कपड़े इतने खास पसंद नहीं आ रहे थे, and plus मुझे स्किन केयर की चीज़ें चाहिए थी, तो I thought why not this buy. तो ये तो बहुत बेसिक है, मुझे शैम्पू चाहिए था और कंडीशनर, तो मैंने भी वो भी इसके पैसे से खरीद ली. I went ahead and bought myself this Vanilla Vibe Bath and Body gift set. And अगर कोई, I'm telling you 200-300%, अगर if you don't have a problem with vanilla and you're not allergic to it something, भाई ये लेके रखो. Like this oil, body oil is amazing. I've been using it for past 3 years and I can bet you it's amazing fragrance. I mean ये लगाने के बाद आपको परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, and it's amazing, amazing, amazing. Trust me. So this has this body oil. ये है body mist, same plum का, and then we have body wash. Very cute. I loved it. मैंने फिर से एक plum का rice water and niacinamide toner खरीदा है, which is for tightness of pore and brightness skin with oat extract. So then I ordered sunscreen from Dot & Key. I was using Aqualogica before and that was pretty much very good for me. So मुझे एक नया ट्राई करना था, which is Dot & Key. So this is the one. Then we have Dove का Deep Repair Treatment Mask because my hair has been quite a lot rough nowadays, and I think the only way to repair is probably do some good thing to them. Just a face mask, eyeliner from Swiss Beauty. This is again a body mist, and this I got from
max. Then I have the last product. This is hydrating and anti-aging under eye cream because आजकल काफ़ी लेट सोना हो रहा है एंड उसके वजह से डार्क सर्कल्स आ गए हैं. तो आई विल ट्राई टू यूज़ दिस एंड सी कितना वर्थ रहता है. सो आई एम जस्ट ओपनिंग दिस फॉर यू एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. स्टेट प्ले है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस थिंग. इसको ऐसे आई गॉट अ गिफ्ट अगैन. इसमें था सबसे फेवरेट चीज़, मतलब सब कुछ फेवरेट ही था मेरा, बट सिंस मेरा प्यार कॉफ़ी की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, सो एग्जैक्टली यू नो व्हाट आई एम गोना शो यू. मुझे ये भेजा गया है नेस्कैफ़े का कोको मोका. नॉट डार्क, इट्स स्वीटर. सो हॉट हो या कोल्ड हो पीना है तो यू कैन हैव दिस एंड इट्स वेरी नाइस. देन आई गॉट ये ऑफ माई फेवरेट कॉफ़ी ब्रांड ब्लू टोकाई, जिसके में वियतनामी कॉफ़ी मुझे मेरे दोस्त ने बताया था एंड आई ड्रैंक एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग. 10 on 10. So from the same brand we have this roasted coffee and I need to taste this and see how it is. So thank you. This is it. We have last one gift, very important, very amazing. This was my birthday outfit. We have it from Veramoja. So this is the top. Similarly इसका bottom भी है. थोड़ा क्या बोलूँ मैं ये, like it's more of like a boho and it was a new collection thing. So I hope I'm not missing out anything else. And this is it. I hope you liked it, everything that I got, and I'm really thank you for each one of you that has sent me or was part of my this birthday. Because जैसे आप बड़े होते हो आपको बर्थडे का कुछ क्रेज़ नहीं होता है, वो ख़त्म ही होता जाता है. And I honestly know I'm not somebody who's very crazy about birthdays. Like खुद का बर्थडे पे इतना मुझे क्रेजीनेस नहीं आता है. I'm very low energy person. So yeah, it was fun to have people around, enjoy, मज़ा आया. लंच पे गए, डिनर पे गए, रात को भी we had this cake cutting thing and all, and we sat, we played Uno, just like normal chill vibe, whole nice thing. सके तो like कर दो, subscribe कर दो. अगर अच्छा लगा हो, नहीं भी अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं है, आपने देखा and that's more than enough for me. And that is it. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.